Hello everyone, welcome to the lecture series of computer graphics. In this video, we'll learn about scan control circles, that is, how to draw a circle using midpoint circle drawing algorithm. So let's begin. Let's say this is a circle with center as the origin. If this is the center, then this is denoting the radius of the circle. Then this point is indicating 0r. Similarly, this is indicating minus r0. This is indicating 0 minus r, and this is indicating r0. Now if I divide this circle into further octants by further dividing the quadrant into 2, so now this is denoting the 8 octants of the circle. Let's name these. This is octant 1, this is octant 2, this is octant 3, this is octant 4, this is octant 5, this is octant 6, this is 7th, and this is 8th. Now, while drawing a circle, we begin from this point and we start moving towards the first octant. Now, when we start moving towards the first octant, that is, we are traversing the circumference of the circle. In this way, जब हम इस point से start करते हैं, this point is 0r. So as we go downwards, we observe that the x coordinate keeps on increasing and the y coordinate keeps on decreasing. Now we will apply the midpoint circle drawing algorithm on this. Let's say I am currently at this point. This point is, let's say, some xp, yp. Now जब हम traverse कर रहे हैं downward following the circumference of the circle, that means we are traveling like this, right? Let's say this is my some east pixel and this is some my southeast pixel. Let's find the coordinates of these two pixels. The coordinates of E will be xp plus 1, yp. The coordinates of southeast will be xp plus 1 and yp minus 1. Now, this is M, which is denoting the midpoint of east and southeast. Now, just as we have seen for the line drawing algorithm, अगर जो हमारा circle है वो pass कर रहा है midpoint के ऊपर से, that means we will choose the east pixel. And अगर हमारा circle pass कर रहा है midpoint के नीचे से, then we will choose the southeast pixel. The same procedure we will follow over here. So basically, choice of pixel is between east and southeast depending from where the circle is passing. Now for this we will use the equation of circle. Now equation of a circle with center at the origin, the equation is x square plus y square equals to r square. If we bring this r square on one side, then this is this. Now, सर्कल के लिए अगर हमने किसी एक ऑक्टेंट के या किसी एक क्वाड्रेंट के हमने पिक्सेल्स फाइंड कर लिए, then using the point of symmetry we can calculate the pixels of all the other quadrants. So let's see how to do that. Circle and how we will use the point of symmetry to calculate all the other pixels in the other quadrants. Let's say if this is the middle line which is bisecting the two quadrants, let's say this point is some xy. Then using the mirror image of this in the quadrant, we can calculate this point. This will be some yx. Now we know this, we can calculate this pixel. This will be some y minus x. We know this, we can calculate this point now. This will be x minus y. We know this, we can calculate this point now. This will be minus x minus y. We know this, we can calculate this point. This will be minus y minus x. We know this, we can calculate this point. This will be
minus y, x. We know this, we can calculate this point. This will be minus x, y. So using the point of symmetry, we have calculated all the other pixels in the quadrants. Now let's see how we will use the midpoint circle drawing algorithm to calculate the pixels in the first quadrant. Now, as seen over here, we have seen that the choice is between these two pixels, that is east and southeast. Now let's calculate the coordinates of a midpoint. The coordinates of a midpoint will be summation of the x coordinates of east and southeast divided by 2. So this will be xp plus 1 only, and this will be twice of yp minus 2 divided by 2, which makes it yp minus half. So these are the coordinates of my midpoint. Now first let's calculate the value of a d old, since this m is the first midpoint of our algorithm. So this is the value of our d old, and depending कि हम यहाँ पे ईस्ट या साउथ ईस्ट चूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा नेक्स्ट मिड पॉइंट कैलकुलेट होगा, दैट विल बी डी न्यू. सो लेट्स फर्स्ट सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आवर डी ओल्ड. सो आवर डी ओल्ड इज, वी हैव सीन दैट द सर्कल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0. So calculating our first midpoint, this is the value of our d old, and the coordinates are of the midpoint xp plus 1, yp minus half. So substitute the value in the equation. This will be xp plus 1 whole square, yp minus half whole square minus r square. This becomes x square plus 1 plus 2xp plus 1 plus y square p plus 1 by 4 minus yp minus r square. Now let's see, if I choose my east pixel first, that means east pixel हम कब choose करेंगे, जब हमारी जो लाइन है या जो circumference की ये सर्कल है, ये पास कर रही है मिड पॉइंट के ऊपर से, राइट. सो दिस इज द सिनेरियो. लेट्स से अगर जो हमारा सर्कल है वो इस तरीके से पास कर रहा है, दैट मींस द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट. तो अगर हम इस केस में अगर मिड पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन ऑफ द सर्कल में, राइट, इन दिस इक्वेशन, सो दिस विल इवैल्यूएट टू 0, राइट, बिकॉज जो मिड पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहा है. तो जो भी पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं वो तो सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. सो इस केस में क्या होगा, जब f ऑफ मिड पॉइंट में, दिस इज माई f ऑफ सम एक्स वाई, राइट, अगर हम इसमें मिड पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन इन दिस केस दिस विल कम आउट टू बी 0. सो दिस इज केस 1. लेट्स से द अदर केस इज, अगर जो हमारा सर्कमफ्रेंस है सर्कल की वो इस तरीके से पास कर रही है, दैट मीन्स समथिंग लाइक दिस. दिस इज द मिड पॉइंट, राइट, एंड इट इज पासिंग समथिंग लाइक दिस. लेट्स से दिस इज सम क्यू पॉइंट, राइट. नाउ जब हमने मिड पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करा है सर्कल की इक्वेशन में, सो उस केस में, पहले वाले केस में क्या था, मिड पॉइंट सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा था और सर्कल जो है मिड पॉइंट से ही पास कर रहा था. तो दैट मींस इट वाज कमिंग आउट टू बी 0. अब हमारा जो सर्कल है वो पास कर रहा है सम पॉइंट Q से, राइट, और जो मिड पॉइंट है वो Q के नीचे है, दैट मींस मिड पॉइंट इज विद इन द सर्कल, राइट. अब इस केस में क्या है, जो Q है, Q और M का x कोऑर्डिनेट तो सेम है, कि जो y कोऑर्डिनेट है ऑफ m इज लेस देन द y कोऑर्डिनेट ऑफ q, इज लेस देन द y कोऑर्डिनेट ऑफ q, राइट. तो अब अगर हम इस q पॉइंट, अब अगर हम सर्कल की इक्वेशन में इस मिड पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि m का जो y कोऑर्डिनेट है वो लेस है देन द y कोऑर्डिनेट ऑफ q, सो इस केस में f ऑफ m की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 0. तो उस केस में जब f ऑफ m लेस देन 0 आ रहा है, दैट मींस वी विल चूज e पिक्सेल, दैट इज m इज इनसाइड द सर्कल, m इज इनसाइड द सर्कल. नाउ लेट्स सी द अदर केस व्हिच इज जब हमारा मिड पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर लाई करता है. दैट मींस
अगर हमारा सर्कल जो है वो इस तरीके से पास कर रहा है, लेट्स से दिस इज माय सम एक्स पी वाई पी, दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट एंड दिस इज द मिड पॉइंट। हम करेंटली इस पिक्सल पे अगर सर्कल इस तरीके से पास कर रहे हैं, नाउ दिस इज माय क्यू। अब इस केस में क्या है, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एम, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एम इज ग्रेटर देन the y coordinate of q, right? y coordinate of m ग्रेटर है। तो अब अगर आप मिड पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करते हो इस सर्कल की इक्वेशन में, तो इसमें क्या होगा, f of m will come out to be greater than 0. So in a case जब f of m greater than 0 आ रहा है, उस केस में हम क्या चूज करेंगे, साउथ ईस्ट, दैट इज मिड पॉइंट इज m is outside the circle. Mid point m is outside the circle. Now let's see how we will calculate the value of d nu in both the cases, when we choose the east pixel and when we choose the southeast pixel. Now let's first take this case. Now ये पॉइंट अगर हमारा कोई xp yp है, ईस्ट के क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए, xp प्लस 1 yp, साउथ ईस्ट के क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए, xp प्लस 1 yp माइनस 1, मिड पॉइंट m के क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए, xp प्लस 1 yp माइनस हाफ। नाउ अगर हम साउथ ईस्ट को चूज कर रहे हैं तो हमारा सर्कल जा रहा है इस तरीके से, तो नेक्स्ट चॉइस ऑफ पिक्सल किन दोनों के बीच में होगी, इसमें एंड इसमें। तो हमारा जो डी न्यू होगा वो कैलकुलेट होगा इस वाले मिड पॉइंट के लिए। नाउ लेट्स फाइंड आउट देयर कोऑर्डिनेट। दिस विल बी xp plus 2 yp minus 1 and this point will be xp plus 2 yp minus 2. Now the coordinates of the midpoint will be xp plus 2 and this will be yp minus 3 by 2. Now we know the coordinates of the new midpoint, right? So similarly we can calculate now d new. So let's first calculate the value of d new when we choose southeast as our pixel. So d new when we choose midpoint as southeast. So in that case the coordinates of the new midpoint are xp plus 2 yp minus 3 by 2. So now change in d with respect to southeast will be d new minus d old. d new के पॉइंट्स आए हैं xp plus 2 yp minus 3 by 2 and d old के हमारे coordinates हैं, this was a d old, this is xp plus 1 yp minus half. We can see in this diagram also the coordinates of this midpoint, this is a d old, so this is xp plus 1 yp minus half. xp plus 1 yp minus half. So now let's calculate the values. xp plus 2 whole square plus yp minus 3 by 2 whole square minus r square. This will be minus xp plus 1 whole square plus yp minus half whole square minus r square. Now when we solve this, this will come out to be, this will be x square p, this will be 4, this will be 4xp, this will be y square p plus 9 by 4 minus 3yp, r square is cancelled. From here we will be left with minus x square p minus 1 minus 2xp minus y square p minus 1 by 4 plus yp. So now this is cancelled, this is cancelled, this is cancelled, this is cancelled.
from 4xp and minus 2xp. We are left with twice of xp. So this is over now. Minus 3yp and plus yp. We are left with minus 2yp. So this is over now. 9 by 4 from the constant terms, 9 by 4 minus 1 by 4. 8 by 4. From 8 by 4 we are left with 2. 2 from here plus 4, 6 and minus 1. So they are left with this. So 2xp minus 2yp plus 5 is the value of our change in D when we choose southeast as our pixel. Twice of xp minus twice of yp plus 5. So this is when the value of midpoint was greater than 0, or we can say the value of D is greater than or equal to 0. This is what we have seen over here, that when the value is greater than 0, in that case we choose southeast as our pixel. That is, M is outside the circle in that case. This will be x square p, this will be 4, this will be 4xp, this will be y square p plus 9 by 4 minus 3yp. R square is cancelled. From here we will be left with minus x square p minus 1 minus 2xp minus y square p minus 1 by 4 plus yp. So now this is cancelled, this is cancelled, this is cancelled, this is cancelled. From 4xp and minus 2xp, we are left with twice of xp. So this is over now. Minus 3yp and plus yp, we are left with minus 2yp. So this is over now. 9 by 4 from the constant terms, 9 by 4 minus 1 by 4. 8 by 4, from 8 by 4 we are left with 2. 2 from here plus 4, 6 and minus 1. So they are left with this. So 2xp minus 2yp plus 5 is the value of our change in D when we choose southeast as our pixel. Twice of xp minus twice of yp plus 5. So this is when the value of midpoint was greater than 0, or we can say the value of D is greater than or equal to 0. This is what we have seen over here, that when the value is greater than 0, in that case we choose southeast as our pixel. That is, M is outside the circle in that case. The value of D is less than 0, in that case we choose east as our pixel. So now when we choose east as our pixel, the choice of new midpoint will be, now in this case when we are choosing east as our pixel, so in that case the line is passing like this, so the choice of midpoint is here and here. So now this point will be xp plus 1. No, this is xp plus 2 and this is yp minus 1. This point is xp plus 2 and yp. So their midpoint, the coordinates of this point will be xp plus 2 and this will be yp minus half. So now if D is less than 0, we are choosing east, and in that case
d new when we are choosing east comes out to be xp plus 2 yp minus half. And we already know the value of the d old. The value of d old is this one, that is xp plus 1 yp minus half. So now change in d when we are choosing east as our pixel is d new minus d. So this is f xp plus 2 yp minus half, and d old is xp plus 1 yp minus half. Let's solve this. This is xp plus 2 whole square plus yp minus half whole square plus r square. Oh, this is not plus, this is minus r square minus r square. This is xp plus 1 whole square minus yp minus half whole square plus r square. So now this is cancelled, this is cancelled, similarly this is cancelled, this is cancelled. So from the xp terms we are only left with x square plus p plus 4 plus 4xp minus x square p minus 1 minus 2xp. So from this we are left with twice of xp plus 3. This is the change in d when we choose east as our pixel. So change in d if we choose east as our pixel comes out to be 2xp plus 3. And the change in d when we have chosen southeast as our pixel, it was twice of xp minus twice of yp plus 5. Now let's calculate the value of D chart. Similarly, जैसे हमने line drawing algorithm में किया था, the D chart is the first midpoint that we calculate. Now let's say अगर हमारा जो starting point है, that is some x naught, y naught. So the value of the first midpoint is this D old value only, right? So the coordinates of this are xp plus 1 yp minus half. So जो हमारे फर्स्ट मिड पॉइंट की वैल्यू है दैट इज x नॉट प्लस 1 y नॉट माइनस हाफ. नाउ क्योंकि हम सर्कल की सर्कमफ्रेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट, एंड वी आर गोइंग डाउनवर्ड, एंड दिस पॉइंट इज नथिंग बट 0, r, राइट. सो when we substitute the value of x naught as 0 and y naught as r, so this becomes f of 1 r minus half. So now let's substitute these values in the equation of the circle. This will be 1 plus r minus half ka whole square minus r square. This will be 1 plus r square plus 1 by 4 minus r minus r square. So this comes out to be 5 by 4 minus r. Now again, this is a floating point value, and in the midpoint circle drawing algorithm we are doing the integer calculations. So we need to convert it to an integer value. So the value of our D chart comes out to be 5 by 4 minus r. We can write this as 1 by 4 plus 4 by 4 minus r. Now let's take this 1 by 4 over here. So on the left hand side we are left with d minus 1 by 4, and on the right hand side we are left with 1 minus r. Now let's replace this d minus 1 by 4 with some other value. Let's call it h. Right? So this h is nothing but d minus 1 by 4.
तो अगर d की वैल्यू हमारी लेस देन 0 है तो h की वैल्यू भी क्या होगी, लेस देन 0 आएगी। अगर d की वैल्यू मेरी कोई भी ग्रेटर देन 0 होती है, राइट, तो उस केस में हमारी h की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 आएगी, राइट। And if I take the value of d value as 0, then in that case h value comes out to be minus 1 by 4. So we take the value, in order to avoid the floating point calculations, we take the value of this initial d कह लो और initial h as 1 minus r. So now let's formulate the entire midpoint circle drawing algorithm. Midpoint circle algorithm. We start from initial values. X की वैल्यू हम 0 लेते हैं. We are starting from this point. So this is 0, r and y की वैल्यू हम लेते हैं r. We calculate the value of initial d कह लो या h कह लो, that is 1 minus r. तो सबसे पहले हम पुट कर देंगे इस पिक्सल को initial values x, y. Now हम तब तक चलते रहेंगे जब तक y की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन x रहती है। ये हमने देखा था, जैसे जैसे हम इस पॉइंट पे क्या है 0, r है, जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे तो x की वैल्यू तो इंक्रीज होती रहेगी एंड y की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती रहेगी। बट एक पॉइंट तक, जब तक हम एक पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते, राइट, उस पॉइंट तक क्या होगा, y की वैल्यू जो है वो ग्रेटर रहेगी x से। एंड आफ्टर दैट पॉइंट व्हेन वी क्रॉस दिस बाइसेक्टिंग लाइन, उसके बाद से y की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। सो सिंस वी नो कि अगर हमने एक ऑक्टेंट की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया, बाकी सबकी हम सिमेट्री से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो हमें सिर्फ उसी पॉइंट तक कैलकुलेट करना है जब तक y की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन x रहती है। दैट मीन्स वी आर इन दिस सेकेंड ऑक्टेंट, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या होगा, y की वैल्यू जो होगी वो लेस हो जाएगी x की वैल्यू से। So while y value is greater than x. Now if d value comes out to be less than 0, तो less than 0 पे हमें क्या करना है, we have to select the each pixel. And जब भी हम each pixel select करते हैं, so the value of my new d, इसको let's call it di. The value of my new di will be ओरिजिनल डी आई एंड ईस्ट के केस में हमारा चेंज इन डी क्या आया है, ईस्ट के केस में हमारा चेंज इन डी आया है ट्वाइस ऑफ एक्स पी प्लस 3. सो ट्वाइस ऑफ एक्स आई प्लस 3. एंड ईस्ट के केस में जब भी हम ईस्ट पिक्सल को चूज करते हैं, वी कैन सी व्हेन वी आर चूजिंग दी ईच पिक्सल, तो ईच पिक्सल के केस में आपका सिर्फ x इंक्रीमेंट हो रहा है एंड y रिमेन्स दी सेम, राइट, इन केस ऑफ ईच पिक्सल. सो इन द एल्गोरिथम वी विल राइट दिस विल बी x will get incremented and y will remain same. So now we will plot this new xi comma y. Else in case we choose the southeast pixel, जब वैल्यू d की ग्रेटर देन 0 आती है, उस केस में the value of d is original di plus twice of xi minus twice of yi plus 5. So we can also write it as di plus twice of xi minus yi plus 5. Now जब हम साउथ ईस्ट को चूज करते हैं, so we can see जब भी साउथ ईस्ट पिक्सल सेलेक्ट हो रहा है तो x तो इंक्रीमेंट हो रहा है प्लस y जो है वो डिक्रीमेंट हो रहा है. So in this case xi xi plus 1 and y will be yi minus 1. We will plot this xi comma y.
So this is the entire midpoint circle drawing algorithm. In the next video, we'll discuss how to solve the numerical of this using the midpoint circle drawing algorithm. If you like this video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.